Campaigning for Haryana is in full swing with the state set to vote on October 5th. Amongst the 89 candidates that the Congress has fielded for the upcoming polls is the debutant Aditya Surjewala. He is a third-generation politician and he along with his father and Congress MP Randeep Surjewala are campaigning in his constituency of Kaithal. In today's episode of The Road Stop, we are in Kaithal with Aditya Surjewala, who is contesting on the Congress's ticket from Kaithal, and his father, Randeep Surjewala. Kaithal Assembly constituency is one of the 90 constituencies in Haryana. Kaithal is also a part of the Kurukshetra Lok Sabha constituency. Initially in the Karnal district, Kaithal later came under Kurukshetra district from November 1st, 1989. Kaithal shares its borders with the Patiala district of Punjab and the districts of Kurukshetra, Jind and Karnal in Haryana. Kaithal Assembly seat has a population of around 1 million, out of which 78.03% population lives in rural areas and 21.9% resides in urban areas. There are around 90.71% Hindus, 0.77% Muslims and 8.15% Sikhs. 7.5 lakh people qualified to vote, and it had a voter turnout of 79.37% in 2019. Historically known as Kaithal, which means the abode of Kapi, another name for Lord Hanuman, Kaithal in Haryana is replete with a long and fascinating history of royal rulers. Originally mentioned in the Mahabharata as being founded by Yudhishthir, the Pandav emperor. Kaithal is also believed to be the birthplace of Lord Hanuman. A number of influential kingdoms ruled over this region over the centuries, each leaving their unique mark in the form of temples, forts and tombs. Kaithal was an important area under the rule of Emperor Akbar, and it was near this city that the great Razia Sultan of the Delhi Sultanate was killed. Today the city is still a landscape of historic monuments and beautiful places of worship. It is known for rice and cotton agriculture. Kaithal Assembly segment is a crucial constituency in Haryana politics, which has seen representatives from different parties, with the Congress emerging victorious 6 times out of the 13 elections held so far. Independent candidates won the seat 2 times, while the Janata Party, Samata Party, Lok Dal, INLD and the BJP won 1 time each. Congress leaders including Rajya Sabha MP Randeep Surjewala and his father Shamsher Singh Surjewala have wrested the seat 3 times. Randeep won the seat twice in 2009 and 2014, while his father secured victory in 2005. This time, Congress has fielded Aditya Surjewala, a third-generation politician, up against 2-time MLA Leela Ram Gujjar of the BJP. Aditya Surjewala is all set to make his political debut at the age of 25. He is the youngest candidate in the fray in the Haryana Assembly polls. He is the son of Congress MP Randeep Surjewala. He is a commerce graduate from the University of British Columbia in Canada and has spent most of his life outside Haryana. Aditya represents the next generation of leaders in Indian politics, particularly within the Congress party. Randeep Surjewala is making efforts to garner support for Aditya. As his family holds significant political influence in Kaithal, he has also stepped out to campaign for his son. Randeep Surjewala was born on 3rd June 1967 in Chandigarh in a Jat family. He is the youngest and 4th child of Chaudhry Shamsher Singh Surjewala and Vidya Kulharia. His father was then Minister of Agriculture and Cooperatives of Haryana. He went to Adarsh Bal Mandir and Arya Higher Secondary School, Nirvana. He did his Bachelor of Commerce from DAV School and his Bachelor of Law degree from Faculty of Law, Punjab University, Chandigarh. At the age of 17, he was appointed as the youngest General Secretary of Haryana Pradesh Youth Congress. He was also the youngest Senator of the Punjab University, Chandigarh in 1992. He also remained a member of the Faculty Consultative Committee in the Law Faculty. In March 2000, Surjewala became the first Haryanvi to be appointed as the National President of the Indian Youth Congress.
He continued to be the president up till February 2005, thus making it the longest tenure in the history of the Indian Youth Congress. March 2005, Surjewala was inducted as the youngest cabinet minister in Haryana, which was headed by Chief Minister Bhupinder Singh Hooda. Later, Surjewala became a Minister for Power, PWD and Parliamentary Affairs and headed the Standing Policy Framing Committee on Civil Aviation. In 2022, Randeep Surjewala became a Member of Parliament in the Upper House from Rajasthan on the Indian National Congress nomination. Supporters and party workers have gathered at Surjewala's residence. The energy is palpable as he is personally meeting with them to discuss strategies and motivate the team. As he arrives amongst the people, he is welcomed with the beats of dhol and garlands by an enthusiastic crowd. Supporters brimming with excitement greet him warmly. Amidst the chants of Zindabad, he warmly shakes hands with the crowd. They present him a statue of Lord Krishna. The crowd enthusiastically guides Randeep Surjewala to a weighing machine. With smiles and laughter, they position him on one side of the scale, while an array of sweets are piled high on the other side. Amidst all of this, we also get a chance to have an exclusive conversation with him. अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो लगातार कैथल में अपना चुनावी प्रसार कर रहे हैं। चूंकि सुरजेवाला जी की जो छोटे सुपुत्र हैं आदित्य सुरजेवाला, वो इस बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो हम बात करेंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से और जानेंगे कि कैथल में आखिर क्या मुद्दे हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सर, मुख्य मुद्दे क्या हैं? चूंकि आप लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, आज आप अनाज मंडी में हैं, किसानों की बात। कैथल कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ खेती और मंडी और आड़त के सिवाय कुछ नहीं हमारे पास। एक्सपोर्ट भी वहीं से है, बिक्री भी वहीं से है, धंधा भी वहीं से है, व्यापार भी वहीं से है, सब कुछ यही। और ये अकेले कैथल की नहीं, पूरे हरियाणा की यही कहानी है। आज देखिए, मंडी में 2.5% आड़त हुआ करती थी, उसे काटकर 45 रुपया बीजेपी की सरकार ने कर दिया। 190 से ज़्यादा लाइसेंस तो इस मंडी में है जो रिन्यू नहीं किए जा रहे। हम अफीम का लाइसेंस मांग रहे हैं, हम केवल फसल की खरीद बेच का लाइसेंस मांग रहे हैं। ये अफीम का लाइसेंस होता है? ये सरकार या तो पागल हो गई है या अपने बदले की भावना में इतनी पागल हो गई है कि वो मंडी के आड़तियों से बदला ले रही है। 14 करोड़ रुपए घटती के केवल इस मंडी से काट रहे हैं। क्यों? जब नमी की मात्रा में फसल आप खरीदने को कहते हैं तो मंडी की क्या जिम्मेवारी है? सरकार उसकी भरपाई क्यों नहीं करती? और नरेंद्र मोदी जी ने पहले किसानों को बहकाया, किसानों और मंडी के आड़तियों का रिश्ता तोड़वाने की साजिश की। फिर श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने ये किया, जेपी दलाल जी ने ये किया। और बीजेपी के नेता तो हमें गालियां देते हैं, कभी तो वो मंडी के आड़तियों को, कभी मंडी के मजदूरों को, कभी किसानों को नक्सलवादी, उग्रवादी, गुंडे, बदमाश, मवाली। कंगना रनौत तो आज तक भी हमें गालियां दे रही है। तो जिनको गाली दे रहे हैं उनकी वोट क्यों चाहिए बीजेपी को? बड़ा सवाल सीधा है। सर, आपने कंगना रनौत का जिक्र भी किया। कंगना रनौत ने फिर से कल एक बार बोला है कि जो 3 किसानों के लिए कानून थे उन्हें वापस लाना चाहिए, चूंकि वो कानून वो समझती हैं कि काफी अच्छे थे, किसानों के हित में थे। 750 किसान और मजदूरों ने अपनी जान की आहुति दी, शहीद हुए दिल्ली के बॉर्डर पर। 1.5 साल तक धूप में, आंधी में, तूफान में, गर्मी में, बारिश में वो वहाँ पड़े रहे। तब जाकर ये काले कानून के बारे में हम मोदी सरकार को झुका पाए। सब जानते हैं कि कंगना रनौत जो हैं वो मोदी जी की चहेती सांसद हैं। अब दोबारा फिर चोर दरवाजे से वही 3 काले कानून लाने चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव तो हो चुका। पर वो जान लें, मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं मोदी सरकार को भी और नायब सिंह जी की सरकार को भी, बीजेपी की सरकारों को। आप अगर काले कानूनों को लाने का दोबारा षड्यंत्र करेंगे, जैसा आप कंगना रनौत के मुंह से कहलवाकर कर रहे हैं, तो किसान चुप नहीं बैठने वाला, मंडी का आड़ती चुप नहीं बैठने वाला, खेत का मजदूर चुप नहीं बैठने वाला। हम इस सरकार का चक्का जाम कर देंगे।
सर बेरोजगारी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया है कि अगर सरकार में आते हैं 2 लाख जो सरकारी नियुक्तियां हैं उनको फुल करेंगे वो। और अभी हमने देखा राहुल गांधी किस तरह से करनाल गए थे और डुंकी का जो मामला है, जो अवैध प्रत्यार्पण के तौर पे लोग यहाँ से जाते हैं बाहर और किस तरह से फिर वो वापस अपने घर नहीं आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश राहुल जी ने दिया है हरियाणा में। तो कैसे देखते हैं सर बेरोजगारी? हरियाणा का नौजवान आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बेरोजगारी 47% पर पहुंच गई है। 47%। बच्चे शिक्षित हैं, लायक हैं, काबिल हैं, गुणी हैं, पर नौकरी नहीं है। आज पीएचडी चपड़ासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, एमबीए एमबीबीएस चपड़ासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। जब पीएचडी चपड़ासी लगेंगे तो जो बच्चा 10वीं पास है या 12वीं पास है वो बच्चा कहाँ जाएगा? जो बच्चा अनपढ़ है वो कहाँ जाएगा? उसको तो कभी जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। और गांव के जो बच्चे हैं, शहर के जो बच्चे हैं, वो अपना मकान रहन करके आधा आधा एक एक किला ज़मीन बेचकर 50 लाख दे के पहले विदेश जा रहे हैं अच्छी ज़िंदगी की तलाश में, फिर वहाँ पर उनकी हत्या हो रही है, फिर 40 लाख रुपए देकर हम उनकी लाश लाते हैं। बंदराना में एक ब्राह्मण परिवार ने 3 दिन पहले यहाँ बच्चे की डेड बॉडी रख के प्रोटेस्ट किया। मटोर एक और गांव है हमारा पड़ोस में, मैंने उनका डीएनए टेस्ट कराया, विदेश मंत्री को लिखा, उनके बच्चे की डेड बॉडी आज तक आई नहीं है। हर रोज हमारे बच्चे मर रहे हैं। हम तो इजराइल की सेना में 15,000 रुपये में भर्ती होने को मजबूर है और बीजेपी ये दावे करती है कि कोई बेरोजगारी नहीं। उन्हें चुल्लू और पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सर आपके लिए एक बड़ा आखिरी सवाल है मेरा, आपके लिए एक बड़ा इमोशनल मोमेंट है चूंकि आपके छोटे बेटे आदित्य सुरजेवाला चुनाव में डेब्यू कर रहे हैं। आपके परिवार से तीसरी पीढ़ी के युवा के तौर पे वो इंटर कर रहे हैं और वो काफ़ी जगह सभाओं में कहते हैं कि जो उन पे आरोप लगता है कि वो विदेशी हैं, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि विदेशी कैंडिडेट हैं, तो इन सब पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, लीला राम जी की आदत है गालियाँ देना और गुंडागर्दी करना। आरकेएसडी में जब वो पढ़ते थे तब से उनका यही धंधा है। मैं उनकी गालियां लेने से इनकार करता हूं, उनकी गालियां उन्हीं को मुबारक। और सर अपने बेटे के डेब्यू पे क्या कहेंगे सर आप? काफी इमोशनल मोमेंट ऐसा है, वो कपिस्थल की तपोभूमि का बेटा है। ये ठीक है कि उसने जन्म मेरे घर में लिया, पर वो मेरा बच्चा नहीं है। वो ये जो बुजुर्गवार खड़े हैं वो इन सब का बच्चा है, इनका भाई है और उसका काम है काम, सेवा, समर्पण। 3 शब्द मैंने उसे दिए हैं, वही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Anushka Surjewala, the wife of Aditya Surjewala, is also actively campaigning for her husband. With a warm smile, she is walking door to door, accompanied by a few party workers. She is meeting with women voters and listening to their concerns. We also spoke to the people of Kaithal. Voters seem to be jubilant as they share their thoughts about them. भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम मुल्तान कंदल सिस्मोर, जो कि मैं यहाँ मंडी में मेरी आड़त की दुकान है बीस रेडी कंपनी के नाम से। यहाँ पर मंडी सब में पहला मुद्दा तो है इस टाइम मंडी की जीरी की बहुत ही गंदी हालत हो रही है। जो 2320 का रेट था जो गवर्नमेंट रेट, आज 1500-1600 में माटी की तरह रुल रही है जीरी। इसको कोई खरीद नहीं रहा। आपने देख लिया जगह जगह कितना दान खिंडी पड़ी है, कोई इनका वारिस नहीं है, इसको ना कोई खरीदने वाले हैं। नंबर 2 बात जो कंगना जी ने बोला है भी ये तीनों कानून वापस आने चाहिए। इसका कांग्रेस सरकार शुरू से ही विरोध कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस तीनों कानून पर हम सहमत नहीं हैं। नंबर 2 बात, हमारे सबसे ज़्यादा समस्या है यहाँ पर जो हमारे लीला जी गुज्जर जी हैं, पहले एमएलए थे, वो कहते थे एक ही चीज़ पर कार्टून लिखा रखे इसने, अब हमारी तो चलती नहीं है। हम इस पर मंडी की समस्या लेकर जाते थे, डेली जाते थे, 10 दिन में 20 दिन में जाते थे, लेकिन एक ही बात कहते थे मेरी सीएम सुनता नहीं है, हमारे खट्टर साहब हैं मेरी बिल्कुल मानते नहीं है, इसलिए मेरा काम होता नहीं है। और नंबर 1 बात, जब भी कहते कोई मैसेज देते तो ये कहते थे भाई मेरी चलती नहीं है। इसलिए हमारा एक मोल आदित्य सुरजेवाला एक तरफा मोल है जी। हम कम से कम 50,000 की लीडों से आदित्य सुरजेवाला को एक तरफा मोल है। इस टाइम मंडी में देख लिया आपने कहाँ कहाँ कितने कम से कम 300 प्रोग्राम तोलने के हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आ रहे हैं अपने मंडी में, आज कम से कम 300 जगह तुलेंगे आज सुरजेवाला जी। इसलिए भी यही पता लगता है कि मंडी में एक तरफा मोल है सुरजेवाला के पक्ष में। चूँकि हमने बात की अभी किसानों को लेकर क्या परेशानियां थी, मंडी में क्या परेशानियां थी, अब हमारे साथ काफ़ी युवा भी हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनके लिए क्या परेशानियां हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम गौरव जैन है जी। गौरव,
बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस अभी उठा रही है। आपको क्या लगता है पिछले 10 साल में जो बीजेपी की सरकार रही है हरियाणा में, उसने किस तरह का काम किया है युवाओं के लिए? जी, बीजेपी सरकार हमेशा से युवाओं के खिलाफ रही है। ये कभी भी रोजगार दे ही नहीं सकती बच्चों को। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रति साल का वादा किया था, कहाँ दिए जी बता दो। कांग्रेस सरकार हमेशा युवाओं को रोजगार देने के लिए हमेशा सक्रिय रहती है और हम कांग्रेस को ही पसंद करते हैं, कांग्रेस को ही वोट देंगे हमेशा जी। तो किस तरह की परेशानियां आप लोगों को आई? चूंकि मोदी सरकार ने अग्निवीर की भी योजना लाई, हरियाणा से काफ़ी नौजवान जो है वो सेना में जाते हैं और अग्निवीर का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, तो क्या विरोध है? आप युवाओं को क्या लगता है? ये अग्निवीर योजना हमारे जवानों के लिए आज तक की आई हुई सबसे बेकार स्कीम है जी। इससे घटिया स्कीम नहीं हो सकती जी। एक आदमी अपनी मेहनत करके अपना खून पसीने से अपने पूरे शरीर तोड़ के सेना में भर्ती होने के लिए जाता है, उसके बाद 3 साल के बाद उसे कह दिया जाता है कि आप जाओ, हम तो सिर्फ 20-25% बच्चों को रखेंगे, बाकी सारों को बेरोजगार जी। वो 75% बच्चे क्या करेंगे जी बाकी जी? ये अग्निवीर योजना जो है कांग्रेस सरकार ने वादा किया है कि इसको खारिज करेंगे। हमारी सेंटर में भी सरकार आएगी और जब हरियाणा प्रदेश में सरकार आएगी तो इस योजना को सबसे पहले खत्म किया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, आपका बेटा आपके भाई को आने। Aditya has also hit the streets of Kaithal. Moving from door to door, he engages with people. Aditya Surjewala sits confidently on stage. A vibrant crowd gathers before him, eager to hear his speech. Supporters greet him warmly, present him with a beautifully crafted turban. Aditya shares his vision and plans for the future of Kaithal. The supporters listen intently and nod in agreement. I am joined by senior Congress leader Randeep Singh Surjewala's son Aditya Surjewala, who is making a political debut in 2024 assembly elections in Haryana, and he's trying to fill in the boots of his grandfather late Shamsher Singh Surjewala and also his father senior Congress leader Randeep Singh Surjewala. So welcome to NewsX first of all. So it's been a quite emotional journey for you, as your grandfather represented Haryana and even your father has represented in Haryana Assembly, and now you are filling his boots. So what has been journey so far? It's been an incredibly supportive and amazing journey in the sense that the amount of love, the amount of blessings I've received from everyone, my Kaithal family, over the past year I have been here has been immense. Everyone for the past 10 years is tired of this BJP rule. They know that no development has happened in our city. No new big projects have been brought into our city. Our infrastructure that my grandfather and father built through with their hard work is all crumbling because they don't take care of it. And they want a change. And we know that change is coming. Everyone on the ground knows that change is coming. It's just a matter of another 10 days. We're trying to reach every single house, trying to reach every single person and get that message across. That change is coming, and they keep telling us that we are with you, Aditya. Don't worry. We know that change is coming, and you will fill those boots, and you will potentially do more than your father and grandfather did. Aditya ji, you mentioned a lot of issues while you were addressing the people over here. You mentioned unemployment, and specifically you mentioned about, Ankit, that how youngsters from Haryana are going abroad, they are taking risk, and how they have to suffer, and even their family have to suffer back at home. And even this issue has been being raised by Congress. Even Rahul Gandhi visited Gogrepur and he highlighted the plight of the family of Amit Kumar, who has been hospitalized in US. So how you plan to take this unemployment as a very big issue in Haryana, and how you plan to give jobs to the youngsters over here? Haryana is very lucky in the sense that we have a very skilled labor force. Education has always been at the forefront of every Haryanvi parent's mind. Most of our children, we have some of the highest rates in North India of college education and bachelor's, master's and PhDs. We have a skilled workforce who is ready to work. But this BJP government, with the introduction of the CET exam, which has been nothing but a scam, has, instead of giving our youth employment, has taken away employment from our youth. We have more than 2 lakh posts empty of government jobs, but they are unable to complete and perform this exam. The paper leaks, results don't come out for multiple years, and even when the results do come out, we've seen cases of the court
basically disqualifying the results. Additionally, no giant private investments have happened in our state. So we've not had a massive creation of private jobs either. We want to rectify both of these. Create a free and fair system of an examination where we can fill more than the 2 lakh open government jobs that are still open, as well as get both national and international investment into the state for the creation of factories and secondary sector jobs, but particularly for tertiary sector jobs, service sector jobs. Because we have such a highly skilled workforce, I know they can do the same kind of works that people in Bangalore, people in Bombay, people in Gurgaon are sitting and doing. Why can't they do it sitting in Kaithal? It's all about sitting in front of a computer. We have English education with us. We have computer education with us. We just have to sit and talk with these MNCs, incentivize them, make Haryana open for business and incentivize large business to come here. And I'm sure cities like Kaithal can see massive growth in terms of both private and public jobs over the next few years. And you have been battling one more battle over here in which BJP is targeting you, calling you a foreigner over here. They are calling you Videshi. What do you have to say on the same? It's a very simple thing that the BJP has no other attack for us, for my father, for me. They know that we are fighting this election campaign on our work. How much work my grandfather did, my father did, and I plan on doing as much, if not more, work than them. So they don't have any political attacks for us. That's why they've swooped this low to having personal attacks both on me and my family, my background. And I think this is absolutely pathetic behavior, and I completely condemn this behavior. I believe if you're fighting an election, you should talk about work, you should talk about the development and how you're making life better for people, not having these personal attacks. Thank you so much. So this was Aditya Surjewala, who spoke to NewsX exclusively, and he talked about what are his plans for Kaithal and how he wants to make Kaithal once again, bring Kaithal once again at the forefront of the development in Haryana. And he also promised the youths that how he plans to provide employment opportunities to the youths over here, as employment has been a biggest issue in Haryana Assembly elections. That's all for now on this episode of Road Stop from Kaithal in Haryana.